Okay, so you are most welcome. This is Kareli Bagh Fulwadi. Okay, and this is Sister Savita, and she will be translating your class today. She is from Madhuban, and I hope you know her. सविता बहन आप जानते हैं ना? हाँ, आपकी खास दोस्त है. दोस्त हाँ. नहीं जानते हैं. बहुत अच्छा. Okay, so sister, this is respected Champa Behan. Champa Behan. Good Okay, हाँ morning. जी किरण, this is आपका instrument. बहुत बहुत स्वागत है Thank you. बड़ौदा की फुलवाड़ी में. बहुत बहुत स्वागत है और आपका अनुभव सुनेंगे तो आपके बारे में और जानेंगे और नजदीक का संबंध हो जाएगा हम लोगों का. Thank you. सविता बहन आप सुनाए क्या कहा चंपा बहन ने. This is your duty. Yeah, she was telling that they are very happy to have you, and I actually understand some Hindi. Okay. Thank you. अच्छा, थोड़ा थोड़ा हिंदी जानते हो तो हमारे लिए अच्छा है. थोड़ा हिंदी तो बोलती तो सविता बहन आप पहचान दो डॉक्टर जयंत भाई और चंपा बहन की. you know, Sister Champa Ben and Dr. Jayant Bhai, they are the instruments to start this center, Karoli Bagh Center, and they are the only officially permitted couple to start and run the center in Gujarat. Otherwise, all the centers are being run by teachers. And they are from Brahma Baba's time. They have taken sustenance from Brahma Baba, and Brahma Baba Wow. officially permitted them to get married, live pure, and do service. Wow. This is Wonderful. yeah, Brother Minish Bhai, you know him. He is also a wonderful, serviceable soul and instrument behind all these double foreigners' experiences in this platform. Wonderful. I think this is the platform where they have accumulated all the double foreigners' experiences in the Yagya, I can say. I think no one tried or did this. That's what, yeah, their speciality is all about. Right. You've had lots of my BK friends on, all the people from Anabuti, and Judy Rich, and Brother Eric Larest, and Brother Eric from New York. So many. Wonderful. Yes. Okay, so you are aware with this program, right? Now I am, yes. Before I first heard about it from Anubhuti because Hemaben was sending out the videos. Yeah. Okay. Great. So, sister, please, you may start your experience now. Okay, well, I came to Baba in. ये audio का problem, sister, something is noisy from your side. Some audio disturbance is happening, Sister Kiran. I'm not sure. Maybe you have to mute yourselves while I'm talking. No, Sometimes. no. This is from your side. I don't know. Everything sounds fine here. See, if I will mute you, then the sound will stop. No, mute yourselves. Okay. You and when you're not speaking. Yes. I understand, but the noise is from your microphone. You know. I have no idea what to do. सविता बहन देखिए अभी आवाज आ रही है आपको? अभी नहीं आ रही है. नहीं, ये सुर आवाज नहीं आ रहा है आपको? अभी नहीं आ रही है. अच्छा. ओके. बीच-बीच में थोड़ी-थोड़ी आती है. आ रहा है ना, तो वो उनके वहां से आ रहा है. कोई बात नहीं, अभी रहने दीजिए. नहीं, वो कंटिन्यूस फिर आएगा. चलिए ठीक है, ड्रामा. Okay, sister, please. Okay. So, according to drama, it was 1979 when I found Baba. And I was living in San Francisco at the time. I was studying holistic health. I was going to be and holistic health then was very new. I was going to become a holistic health educator and teacher. And so holistic health means body, mind, and spirit, right? And they were just starting
to bring in the spiritual dimension of health at that time. So या मैं ड्रामा अनुसार 1979 में बाबा के ज्ञान में आई। उस समय वैसे तो होलिस्टिक हेल्थ एक कॉन्सेप्ट है जो उन्हीं दिनों जस्ट शुरू हुआ था, तो ये होलिस्टिक हेल्थ का जैसे टीचर बनने जा रहे थे। होलिस्टिक हेल्थ माना बॉडी माइंड स्पिरिट, ऐसे विदेशों में कॉन्सेप्ट चलता है। उस समय इनको माना लगभग बाबा का जैसे ज्ञान मिला। actually, my experience is written in that book called Mothers. I don't know if you are familiar with that book. It's got a lot of seniors and older double foreigners experiences in that book, and it's in Hindi as well as in English. But apparently, the Hindi version of my story in that book is not really what happened at all. So if you're familiar with that, I'm setting the record straight today. तो एक डबल फॉरेनर्स के जितने भी एक्सपीरियंसेस है उनका एक किताब बना हुआ है, उसका नाम है मदर्स। वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में है, लेकिन जो हिंदी वर्जन है उस किताब का, उसमें इनका जो अनुभव है वो कहते हैं कि इतना ठीक नहीं बताया है, लेकिन मैं मैक्सिमम आज कोशिश करूंगी कि मैं अच्छे मैं से उसको समझता हिंदी बताऊं। वंदे मातरम है ना सविता बहन, वो वंदे मातरम। अच्छा, Yeah. मदर्स, हाँ Yeah. हिंदी वर्जन में वंदे मातरम नाम है। हाँ, ओके, वंदे मातरम। ओके। So anyway, I was studying this new school had opened, and I was studying holistic health there. I was thinking of getting a master's degree because I'd already graduated university. And someone suggested that I go and interview these two sisters who had just moved to San Francisco recently. But before I get to that part, I had been searching. I was raised in the Christian faith, and my parents were very devout Christians. We lived right across the street from the church. My father was a deacon. My mother was the church secretary. तो ये सोच रहे थे उन दिनों में, 1979 की बात है, कि मैं मास्टर्स कर लूँ, होलिस्टिक हेल्थ में पढ़ाई कर लूँ। फिर किसी ने इनको सजेस्ट किया कि सैन फ्रांसिस्को में उन्हीं दिनों में वो दो बहनें सेंटर पर आई हुई थी, तो आप जा करके उनका इंटरव्यू लो। वैसे तो सिस्टर क्रिश्चियन फैमिली को जैसे बिलोंग करती है, क्रिश्चियन धर्म को ये लोग मानते हैं। इनकी मदर खुद भी जो चर्च होता है ना उसमें सेक्रेटरी थी। एंड व्हाट वाज फादर, सॉरी? He was like a trustee or a deacon of the church, they call them. चर्च के इनके फादर जो थे वो ट्रस्टी थे, माना बहुत क्लोजली कनेक्टेड थे क्रिश्चियनिटी के साथ। So, however, I didn't feel any sense of belonging there, and I saw a lot of hypocrisy there. So, as soon as I got away and went to college, I started looking at other paths. इनको चर्च जब गए ना अच्छा नहीं लगा, मजा नहीं आया इतना वहाँ की जो बातें थी वो देखकर। तो फिर ये जैसे ढूंढ रहे थे कि सही रास्ता कहाँ ना कहाँ तो जरूर मिलेगा। And I explored a lot of things, Chinese philosophy and astrology, and there were several different gurus going around the US at that time. You might have heard of Guru Maharaji, and there were some other ones too, Baba Free John, many people. तो ये सविता बहन जी आपका वॉइस भी बहुत कम आ रहा है, लो वॉल्यूम है आपका, थोड़ा माइक्रोफोन सेट कीजिए। अभी ठीक है? अभी ठीक है? हाँ, आप थोड़ा वो हट जाता है तो कम हो जाता है। और सिस्टर किरण, एक्स्ट्रा हैवी नॉइज इज देयर, बैकग्राउंड नॉइज, समथिंग एक्स्ट्रा नॉइज इज फ्रॉम योर साइड, so please do something if you can, otherwise whole video will be noisy. अभी आ रहा है इनका। हाँ, काफी आवाज है यहाँ, ऑडियो में बहुत नॉइज हो रहा है। सबको एक्स्ट्रा आवाज आ रहा है भाई, हाथ खड़ा करो अगर एक्स्ट्रा नॉइजी हो रहा है। हाँ देखिए सिस्टर, एवरीबडी इज फीलिंग दिस एक्स्ट्रा नॉइज। Is it better now? No. No. I have no idea what to do because I never had this problem before, and I do this broadcast every day. So any kind of electronic device is working there in your room, extra something is there.
No, the only thing that's here is my cell phone. I can turn that off. We haven't felt such a great extra noise. Okay, I'm turning it off. हाँ बोलो अशोक भाई क्या कह रहे हो? कोई फैन वगैरह चल रहा हो साइड फैन में एसी और फैन एसी तो नहीं होगा उनको, अभी तो ठंडी का टाइम है. हाँ तो फैन कोई इधर उधर कोई एसी अच्छा नहीं, और Now? ओके कोई हाँ नाउ इट्स ओके मैं समझता हूँ बंद हो गया आवाज. नहीं Okay. नो इट्स देयर. There's nothing. Anyway, drama. Okay. I'm so sorry. I don't have any idea. There's nothing Do you else. have any other device, sister? I've turned everything off. Do I have any other device than this? Oh, that would. I don't have another microphone, no. Okay. But I don't know. Wait a minute. Let me try this. Hold on. Does that help? Right now it's okay, but Is it better now? Okay, fine. Now there is no noise at this Oh, moment. it was something to do with the Zoom Okay. original sound. Okay. Now it's okay. No noise is there. Extra noise is not there. Okay. Sorry for disturbance, but it was necessary. because after this it will go on YouTube, no? Yeah, Many will take benefit. That's why I yeah, paused that you. is. Yeah. ओके सविता बहन आप भी थोड़ा बीच बीच में ख्याल करना, शुरू में साउंड आपका कम रहा तो ठीक है. ओके चलो बाबा. चलिए हाँ थैंक यू. ओके सिस्टर. Okay. So where was I? You were Chinese psychology, astrology, gurus. You were there. Yeah. Yeah, I mentioned that I'd been around to a bunch of different gurus and I was searching here and there. And so it turned out that at that time, there was a guru, you might have heard of him, Swami Muktananda. And he had an ashram in Oakland, California, across the bay from San Francisco, a big ashram. And all the big top doctors and lawyers and people like that in the San Francisco Society, they were going to him. तो ये इधर उधर जैसे ढूंढ रहे थे परमात्मा के लिए. तो आपने सुना होगा उन दिनों ऑकलैंड कैलिफोर्निया में मुक्तानंद जी करके एक स्वामी जी थे. उनके पास जैसे सैन फ्रांसिस्को से भी कहीं सारे बहुत सीनियर टॉप डॉक्टर्स है, लॉयर्स से बहुत सारे जो है उनके पास जाया करते थे उस मुक्तानंद स्वामी जी के पास. And at that time, he charged for his weekend satsangs, and it went from early in the morning on Saturday to Sunday evening. And it was, I don't know exactly, maybe $150 for the weekend, which back then was a lot of money. या तो स्वामी जी के पास अगर किसी को जाना है तो वो बहुत पैसा चार्ज करते थे. जैसे सैटरडे जाना है, संडे इवनिंग तक वहां रह के वापस आना है तो $150 माना उन दिनों बहुत पैसा होता था. $150 माना ये ज्यादा एक्सपेंसिव लगता था. And I was quite poor at that time, and I was trying to pay my way through this holistic life university to get a master's degree in holistic health. So I didn't have a lot of money, but somehow I managed to get together this $150. तो ये बहुत उन दिनों बहुत गरीब थी सिस्टर, क्योंकि इतना पैसा नहीं होता था. पढ़ाई भी करते थे, इनको होलिस्टिक हेल्थ केयर में पढ़ाई करते थे. तो फिर इनको लगा कि मुझे स्वामी मुक्तानंद जी के पास जरूर जाना चाहिए. तो कैसे भी करके इन्होंने $150 रुपए इकट्ठे किए. And so I went to this satsang, and all day the swamis would talk to you and make you chant and explain things. And then at the end of the day, Swami Muktananda ji would come through the hall. He had an occult power called Shaktipat.
and he would touch people either with his hand like this or with his peacock feather. ओके तो ये गए स्वामी मुक्तानंद जी के पास, वहाँ $150 पे करके वहाँ जैसे सारा दिन मंत्र वगैरह उच्चारण करते थे हॉल में बिठा के। वो स्वामी मुक्तानंद जी जो थे इनको टच करते थे, या तो हाथ से या तो मोर के पंख का वो होता है ना गुच्छा जो बंडल होता है, उससे ऐसे ऐसे करते हैं ना स्वामी लोग, ऐसे ऐसे टच करते थे। And so I'm sitting there in this hall, and the Swami in his long flowing robes, he's going through and he's touching everybody. And people are having amazing experiences. Some of them would start hyperventilating like that. Some people would start talking in tongues. And other people were having visions, and like the place really sounded almost like a human zoo. ह्यूमन जू। ओके तो जब वे गए वहां स्वामी जी के पास, ये सब हुआ, फिर वहां पर जैसे स्वामी जी लोगों को टच करते थे तो जैसे लग रहा था लोगों के बहुत अजीब अजीब अनुभव होते थे। जैसे कोई अपने केवल जीभ से बात करते थे, कोई जानवर जैसे बिहेव, जैसे सिस्टर ने एक्शन करके दिखाया ना, ऐसे जैसे मानो व्यवहार करते थे। वो सब देखकर इनको लगा, मैं कहा ह्यूमन जू में पहुंच गए। जू होता है ना जहाँ जानवर रहते हैं, तो इतने सारे ह्यूमन यहाँ एक जू में इकट्ठे हो गए हैं, प्राणी संग्रहालय में, ऐसे इनको लगा वो देखकर। So finally he gets to me, and he goes like this on my forehead, and nothing happens. लेकिन इनको कुछ अनुभव नहीं हुआ। भले स्वामी जी ने इनको ऐसे हाथ से ऐसे टच किया, कुछ भी किया, लेकिन इनको अनुभव नहीं हुआ, कुछ भी अजीबो गरीबो अनुभव नहीं हुआ। Nothing happens. So the only thing I could conclude from that is that there was something very spiritually wrong with me, and I better do something about it. तो फिर इनको लगा कुछ नहीं हुआ, इनको इतना सारे लोगों को इतना कुछ वहां हो रहा था लेकिन इनको कुछ नहीं हुआ, तो इनको लगा कि इससे दूसरा कोई शक्ति है जो हाईएस्ट है, मुझे और कुछ करना चाहिए। I should also mention that I was a single mom at that time, and so I made a plan to move into the Swami's ashram with my 10-year-old daughter, like right away. तो इनको उन दिनों 10 साल की इनकी बेटी भी थी, और इन्होंने वो सोचा कि बेटी के साथ में मुक्तानंद जी के जो आश्रम है मैं वहीं पे चली जाती हूँ। However, a week before I was scheduled to move into that ashram, I went to interview these two BK sisters for my thesis. And my thesis was, okay, we know how to assess physical health, right? You go to the doctor and he tests your blood pressure and your temperature and all those things. We know how to assess psychological and emotional health, but how do you know if someone is spiritually healthy? So you asked this question to the sisters? No, this was my thesis. Okay, How to figure out how someone is spiritually healthy. Okay. तो जैसे इन्होंने सोचा ना मैं मुक्तानंद जी के आश्रम में चली जाती हूँ, तो उससे एक हफ्ते पहले सेंटर पर गए जहाँ पर 2 बहनें रहती थी, उनसे इंटरव्यू लेने के लिए। इनका जो थीसिस चल रहा था होलिस्टिक हेल्थ का, तो उसमें इनका क्वेश्चन था, जब हम फिजिकली बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, दवाई वगैरह लेते हैं, अगर कोई स्पिरिचुअल हेल्थ उसको चाहिए, उसको क्या करना चाहिए? ये भी इनके थीसिस में क्वेश्चन था। Yeah, so I went to interview these sisters to ask them about what is spiritual health. And the sisters at that time were Sister Chandru, who you all know very well, and Sister Denise Lawrence. And they were living in this, they had just come to the Bay Area. This would have been May 1979. They just arrived, I think, in January or December of 78 there. And they came there to attend this conference on meditation. And so they had gotten this little tiny apartment, and there were hardly any students. So there was hardly anything in Baba's box.
and they didn't hardly have any furniture. And I found out later they hardly had any food. तो जब ये सेंटर पर पहुंचे वहाँ दो महान आत्माएं जो है चंद्रू दीदी और सिस्टर डेनिस दोनों थे। बहुत छोटा सा सेंटर था, उनके पास इतना पैसा भी नहीं था। वो बे एरिया में अभी ही वो लोग आए थे। ये मई 1979 या मैक्सिमम 79 की बात है। वो लोग वहाँ पर जैसे जनवरी 79 या दिसंबर 78 में गए होंगे। वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए वो लोग गए हुए थे। तो बहुत छोटा सा सेंटर था, बाबा के भंडारे में कोई पैसा नहीं था बॉक्स में, और खाने के लिए भी हार्डली उनके पास कुछ था। So this little one-bedroom apartment in the inner Sunset District of San Francisco was located on the second floor of, I guess you would call it the first floor. I can never keep that straight. But it was above an auto body shop, right? And so the auto body shop is where they paint cars, and the paint fumes would be coming up through the, through the floor and things. And it was also across the street from Colonel Sanders' Kentucky Fried Chicken. So if the window was open, you would smell all of that. एक बेडरूम का जैसे वो बाबा का घर था, और एक अपार्टमेंट जैसे सेकेंड फ्लोर में था लगभग। वहां पर जैसे नजदीक में एक चिकन शॉप भी था, और एक जहाँ कार्ड्स वगैरह प्रिंट करते हैं वो भी शॉप था, एक चिकन शॉप भी था। तो दरवाजा खोलते ही कौन सा स्मेल अंदर आएगा? चिकन का स्मेल अंदर आएगा। कितना अनकंफर्टेबल बात है ना ये। And the apartment had hardly any furniture. So I went to interview these sisters there. And there was something about the atmosphere in that place that was so silent and so wonderful. It was like a little bell went off in my head. Ding! This is what I want, right? I don't know what is all that stuff over there in that ashram in Oakland with all that noise and stuff, but this is what I want. So I didn't move into that ashram, and I started taking the course. वाह, अमेजिंग। तो सेंटर में कोई फर्नीचर नहीं थे जब वे गए, बहुत साधारण सा सेंटर था। जैसे ही ये सेंटर पर गए, इनको वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा लगा। कितना शांति है यहाँ पे, वंडरफुल। क्योंकि ये मुक्तानंद जी के पास गए थे तो वहाँ इनको जू लगा, इतना आवाज, इतना शोर शराबा, इतना कुछ वहाँ क्योटिक लग रहा था। लेकिन जैसे सेंटर पर पहुंचे, बाबा के घर में पहुंचे, इतना शांति का अनुभव हुआ, और उन्होंने कहा ये मैं सच में ढूंढ रही थी। So then I started taking the course. That was in May, and then in September of 1979, by this time, there were about 10 of us who were regular students, double foreign students. And so Daddy Janki came to San Francisco to meet us because we were the first group of BKs that were forming in the United States. तो इन्होंने कोर्स लिया। फिर सितंबर 1979 की बात है, तब तक लगभग 10 जितने बाबा के बच्चे हो गए थे। तो दादी जानकी गए इनके पास खास मिलने के लिए सैन फ्रांसिस्को, क्योंकि केवल ये 10 बाबा के बच्चे पूरे यूएसए के वहां से निकले थे। And my birthday happens to be in September, and so we were celebrating my birthday and the birthday of another brother, Brother Mario. That was one of the events to do when Dottie was there. And so they dressed us up. They dressed me up as Narayan, and they dressed up another sister as Lakshmi. And they sat me next to Dottie. And Dottie looked at me and she said, "Who is in front of you?" And I don't know, so I took a wild guess and I said, "Baba." And Dottie smiled very broadly. And then she said, "Who is behind you?" So I said, "Baba."
getting the right answers. And so Daddy said, okay, who is on this side of you? I said, Baba. Who is on this side of you? Baba. Who is below you? Baba. And then she put her hand like this and she said, and who is above you? Baba. This way, Daddy surrounded me with Baba. And then she said, now you cannot go anywhere else. Yeah. I'm still here because I couldn't go anywhere else. ओके सो तो जब दादी वहां पर गई तो इनका जैसे इनका बर्थडे सितंबर में होता है, दूसरे एक ब्रदर मारिया का भी जैसे बर्थडे था, तो इनको नारायण का ड्रेस पहनाया, एक सिस्टर को लक्ष्मी का ड्रेस पहनाया, इनको दादी के बाजू में बिठा दिया। तो दादी ने इनको पूछा आपके इस साइड में कौन है? इन्होंने कहा बाबा। इस साइड में कौन है? बाबा। ऊपर कौन है? बाबा। नीचे कौन है? बाबा। तो चारों तरफ बाबा ही बाबा है, तो आप अभी बाबा को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते हो, ऐसे दादी ने इनको ब्लेसिंग दिया। And in those days, Sister Genti was always with Daddy as the translator, right? And so when they were leaving, Sister Genti says to me, see you in Madhaban, Kiran, because Daddy actually changed my name. My Lokik name was Karen, Karen, which is a nice name. It means pure. But she changed it to Kiran, right? Which of course, you know, it means raise. So Genti says, see you in Madhaban, Kiran. And I'm going, Madhaban, India? I don't even have a passport, right? And how am I going to get money to go to India for a ticket, right? But anyway, Genti said this, and so somehow I had this faith that, well, maybe it's supposed to happen. So I'm talking to one of my fellow students at this Holistic Life University and telling her my experience and saying, I don't know, maybe I'm supposed to go to India. And she said, well, she happened to be wealthy, and she said, I will lend you the money. And I went, really? ओके Pay तो it back. उन दिनों जयंती दीदी होते थे हमेशा जानकी दादी के साथ ट्रांसलेशन करने के लिए। तो जयंती दीदी जब जा रहे थे इनसे सबसे मिलके कहा ठीक है सी यू इन मधुबन, ऐसे इन्होंने जनरली कहा, बाय बाय बोलते समय बोलते हैं ना मधुबन में मिलेंगे। तो सिस्टर ने कहा अच्छा मधुबन, इंडिया? मैं कैसे जाऊंगी, मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं है, मेरे पास पैसा भी नहीं है, कैसे मैं मधुबन जाऊंगी? तो इनके एक फ्रेंड थे, उन्होंने कहा अच्छा आपको जाना है, मैं आपको पैसा दूंगी, कोई बात नहीं आप जाओ, मैं आपको जैसे कर्जा दे दूंगी, आप भले जाओ करके। इनको जैसे बहुत सरप्राइजिंग लगा। तो और इनका जो नाम था पहले वाला वो KAREN कैरन था, इसका मतलब प्योर, प्योरिटी, पवित्रता है। फिर दादी ने इनको किरण नाम चेंज किया। So the plan was that the group, all the 10 group of students, would go to Madhavan in December. And this was by now already October. And I didn't have a passport. And I didn't even have my birth certificate. My birth certificate was on the other side of the country in some county records office. So I called up that county records office and I told them the situation. And, you know, it would cost, I had to send $12 or something to get my birth certificate. And the lady on the phone, after listening to me, she said, honey, you don't worry about a thing. You just put the check in the mail. I'm going to put your birth certificate in the mail. I'm not going to wait until I get your money. तो जो 10 स्टूडेंट्स थे वो लोग सारे जैसे दिसंबर में मधुबन आने का उनका बन रहा था प्रोग्राम, या ऑलरेडी अक्टूबर की बात है। तो इनको पासपोर्ट चाहिए ना, इनको भी आना है, तो इनके पास पासपोर्ट नहीं है। पासपोर्ट बनाने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी नहीं है। और वो बर्थ सर्टिफिकेट मिलेगा देश के दूसरे साइड में जहाँ उनका ऑफिस है। तो इन्होंने वहां पे फोन लगाया, ऐसी ऐसी बात है, उसके लिए $12 खर्च होने वाले थे। उन्होंने कहा आप पैसे की चिंता नहीं करो, मैं आपके बर्थ सर्टिफिकेट बना के आपको भेज दूंगी, ऐसे वहां के ऑफिस में जो थी ना लेडी, उन्होंने इनको कहा। So I got my birth certificate, I got the passport, had the money, and in
December of 1979, we were on our way to India to meet Baba and to be there for Christmas. तो 1979 में दिसंबर में फर्स्ट टाइम यूएसए से इंडिया आए, मधुबन आए क्रिसमस में बाबा से मिलने के लिए. When we arrived in Mumbai, you know, Ramesh and Usha Ben came to meet us because we were the first group from the US, right? And she came to meet us with a VW bus. And when the plane landed, I had never flown very much in my life. But when I came down, we had to come down onto the tarmac. And that I had certainly never experienced before. So we came out of the plane down on the tarmac, and we're standing there, and it's, you know, the Bombay airport, right? It's smoggy, foggy, it stinks of diesel fuel, and it's polluted. And the only thing I could feel is that I've come home. ओके, तो फर्स्ट टाइम इतना लंबा यात्रा इन्होंने किया है. इंडिया बॉम्बे पहुंचे, बॉम्बे में रमेश भाई जी, उषा बहन जी जो थे, इनसे मिलने गए, बस में गए थे क्योंकि पहला ग्रुप है ना अमेरिका से जो आया हुआ है भारत. तो बहुत लंबा फ्लाइट था, जैसे इतना लंबा सफर तो इन्होंने कभी किया नहीं था. तो प्लेन से जैसे उतरे, बाहर आए, इतना रश, इतने सारे लोग, इतना जैसे बॉम्बे में पोल्यूशन तो होता ही है, इतना कुछ क्योटिक था सब कुछ. उसके बीच में इनको अनुभव हुआ मैं अपने घर में पहुंच गई हूँ. So, and Usha Ben greeted us all with these baby sweetheart roses, and they took us to the center. But they didn't really have a place to accommodate the 10 of us, or maybe they weren't quite sure, you know, what kind of souls we were. So they put us up in a nearby hotel. And this is the train station in Mumbai that's right by the railroad track. I forget the name of it. But there was this hotel called the Hotel Lovely right next door to this center. And so myself and this other sister were given a room in this hotel. And it was anything but a Hotel Lovely. It was dark, and the sheets looked like they were grody with, you know, very dark and unwashed. And we looked in the bathroom. It was this long, narrow room, and we didn't know how to use Indian plumbing system. And we saw a cockroach in there. We just sat on top of the bed and started laughing hysterically at our situation. तो जैसे ही ये उषा बहन जी इनसे मिले, इनको फ्लावर सब दे दिया, वेलकम किया, सेंटर पर लेकर गए. लेकिन सेंटर बहुत छोटा था, इनको कहाँ रखे 10 लोगों को. एक लवली करके होटल में इन सबको वहां पर लेकर गए. होटल का नाम तो लवली था, लेकिन होटल लवली नहीं था. क्योंकि वहां होटल की स्थिति ऐसी थी, एकदम शीट वाला, डार्क था, क्लीन नहीं था. और इंडियन बाथरूम को कैसे यूज करना है इन लोगों को मालूम नहीं होता है. कॉकरोचेस भी थे वहां पे. तो सारा सिचुएशन देखकर बेड पर बैठकर सब हंसने लगे कि हम कहाँ पहुंच गए. We finally got to Mount Abu, and we met Baba in the meditation hall in Panda Bhavan. Okay. And at that time, there was about totally maybe 50 double foreigners from around the world there. And we were sitting on the floor on the brother's side, and we had those headphones that were all on one long string, and you just had to hang them over your ears. Yeah. So finally, yeah. Sorry, Sunita. Then the gutty was like right on the floor, like there wasn't a stage or anything, right? So it was right there on our level, and we were right in the front. Yeah, okay. तो मेडिटेशन हॉल पांडा भवन की बात है. केवल 50 डबल फॉरेनर्स थे जो पूरे विश्व से आए हुए थे. इस जमीन पर बैठकर बाबा से मिले. हेडफोन्स इनको मिले हुए थे ट्रांसलेशन सुनने के लिए. और बाबा भी जैसे इनके ही लेवल पे था, क्योंकि स्टेज वगैरह तो था ही नहीं ना. ये लोग नीचे बैठे थे, थोड़ा सा गद्दी हाइट पे होगा, वरना ऑलमोस्ट इनका और बाबा का जो बैठने का लेवल था एक ही था, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था.
And if you remember that Murli of Christmas Eve 1979, it's a very serious Murli. Baba's talking about destruction and how on all four sides there would be natural calamities on one side, there would be nuclear war on another side, there would be civil war on the third side, and on the fourth side there would be all these disembodied souls attacking. तो 1979 क्रिसमस की अगर हम मुरली देखें तो बाबा बहुत स्ट्रिक्टली उसमें मुरली में बात किया है कैसे विनाश होगा, नेचुरल कैलामिटीज होंगे, सिविल वॉर होगा, सारी प्रकार की बहुत स्ट्रिक्टली बाबा ने उस मुरली चलाई, बहुत स्ट्रिक्ट वाली मुरली. And so it was quite a chilling Murli. And then when it finished, the daddies came up in front with Baba. And at that time there was Chandramani Dadi and Manohar Dadi and Buddy Dadi and Didi, and so many of them, right? And they were all around Baba. And to me, it just looked like, you know, the picture that Michelangelo painted in the Sistine Chapel of God meeting these, you know, his children. It looked like that. या तो जैसे ही बाबा ने मुरली वगैरह चलाई उसके बाद दादियाँ जैसे आते बाबा से मिलने के लिए, चंद्रमणि दादी, मनोहर दादी, दीदी, मनमोहिनी दीदी, बड़ी दादी, सब जैसे बाबा के आसपास जाते हैं ना जैसे मिलने के लिए, इनको दूरदर्शी इतना अच्छा लगा देख के, जैसे माइकल एंजेलो का एक कोई पेंटिंग है जहाँ पर जैसे परमात्मा के सब बच्चे साथ ऐसे खड़े हैं, वो जैसे वो पेंटिंग, वो पिक्चर जो है उनके सामने जैसे आ गया वो चित्र. And just like that, the atmosphere changed, everything changed, and people started celebrating and dancing, and, you know, it was joyous. It was Christmas, right? And I was like, what? I couldn't understand it. You couldn't understand Christmas celebration? I didn't understand how we could go from such a serious Murli to this sudden celebration and everybody dancing. तो जैसे सब हो गया उसके बाद अचानक सब क्रिसमस पार्टी है ना, तो सब डांस करने लगे, गाने लगे, नाचने लगे, तो इनको वंडर लगा अभी बाबा ने इतनी सीरियस मुरली चलाई है विनाश के बारे में और अभी ये लोग नाच रहे, गा रहे, क्या हो रहा है करके थोड़ा सा इनको कंफ्यूजन हो गया. And then suddenly it was over and Baba left. And I was like, what? It's over now? Wait a minute. I waited 5,000 years for this and this is it? फिर ये सब देखते देखते बाबा तो एक सेकंड में चला जाता था ना, तो देखते देखते बाबा चला गया एक सेकंड में. अरे ये क्या हो गया, मैं तो 5,000 साल वेट किया है उसके लिए और वो चला गया ऐसे तुरंत अचानक ऐसे. And somehow it touched a very deep vein of sorrow in me, I think, because, you know, we were searching for Baba for all those years and not finding, you know, and now here he is and now he's gone, you know. So we were staying at that time in Vishal Bhavan, some of you know, in Panda Bhavan, just outside. And it was at that time not nice like it is now. It was kind of drafty and the pipes dripped water and it was winter, right? So it was very cold. And I sat up all night on those steps going up to the second floor of that, Gyan Vigyan Bhavan, not Vishal Bhavan. Gyan Vigyan Bhavan. I sat there on those steps just crying all night long because I was so heartbroken that Baba had just come and gone, right? And Brother Lakshman would come and he'd look at me and I'd still be sitting there and he'd come back a couple hours later. I was still sitting there. So how long Baba was there? For how many hours he was there? I don't remember, but it probably was until maybe midnight or something. Okay. But, you know. तो इनको लगा कितना मैंने भगवान के लिए ढूंढा है और मैं आई बाबा से मिली और बाबा ऐसे इतना जल्दी वापस चला गया, ये वो बात इनको हजम ही नहीं हुई.
तो इनको ज्ञान विज्ञान भवन जो पांडव भवन में है, बाहर है पांडव भवन से, वहाँ इनको अकोमोडेशन मिला था। तो फिर ये बैठकर जैसे रो रहे थे, ऐसे कैसे बाबा जा सकता है, ऐसे कैसे बाबा चला गया, उसके लिए मैं इतना ढूंढ कर यहाँ तक पहुंची हूँ। तो जो ज्ञान विज्ञान भवन संभालता है भाई, उसका नाम है लक्ष्मण भाई, वो आ रहा है, इनको देख रहा है, फिर आएगा, फिर देख रहा है, क्योंकि सारी रात सीढ़ियों पर बैठ के रोते रहे। So the next morning, I went at breakfast time. Sister Gayatri noticed that I was kind of upset, and so she asked me what was wrong. And I told her, I was so, it was like an emotional roller coaster from going from the seriousness to the joyousness, and then all of a sudden this well of sorrow came out of me. And so she took me to Dadi Gulzar, right, to sort me out. And so I explained to Dadi, I said, Dadi, how can you keep these things in your head, like so serious about destruction and then so much joyousness on the other side? I don't know how to deal with this. Dadi तो looked at me. इनका स्थिति देखा नहीं जाए, सिस्टर गायत्री जो है ना, तो उन्होंने वो इनको दादी गुलजार के पास लेकर के गए। तो दादी गुलजार को इन्होंने पूछा, दादी ऐसे कैसे हो सकता है, बाबा आया, इतना सीरियस मुरली बाबा ने चलाया, ऑल ऑफ सडन सेलिब्रेशन में चली गई सारी बातें, कैसे हो सकता है ये। And Dadi looked at me very compassionately, and she smiled, and she went, Om Shanti. Om Shanti. You're a soul. You are a peaceful soul. You're just sitting here. All this is just a drama. It's like, it's not a problem if you're soul conscious. तो दादी ने इनको बोला, ऐसे यहाँ पर हाथ दिखा के कहा कि ओम शांति आत्मा शांत स्वरूप है, अगर आप आत्मिक स्थिति में हैं तो इन बातों का कोई आपको असर नहीं करेगा। And at that time, of course, Baba would come every other day practically. And so I was also there for that beautiful Murli of the 1st of January, 1980, which is the whole golden age of Murli. तो जैसे until like how long you stayed in Madhuban? That I think 3 weeks. Okay, 3 हफ्ता ये मधुबन में रहे जब गए थे, तो उसके बाद Maybe 2 weeks, yeah. 2 हफ्ते तक मधुबन में रहे। You met बाबा twice ना, maybe thrice, 2 or 3 times. Times, yeah. तो 2-3 बार जैसे बाबा से मिलने का इनको मौका मिला। तो उसके बाद जो मुरली आचली जब ये थे मधुबन में 1980 जनवरी की बात है, तो उसमें जैसे बाबा ने सारा जो है सत्युग के बारे में मुरलियाँ चलाई है, तो ये उनको बहुत अच्छा लगा। So the point of this story in a way is that I came to Baba because of the feeling of the vibrations, the atmosphere, the love. But in terms of the Gyan, a lot of it didn't really go in my intellect. And I would sit in Murli class and it was kind of in one ear and out the other. I really couldn't relate to it. What I really related to most was when the letters would come from Dadi Prakashmani, and Sister Chandru would read those to us and translate those for us. Then I felt like, wow, I understand this. It's amazing. I belong here. But the Murli was not something I could grasp for a long time. तो इनको जैसे बाबा का जो परिवार है, वातावरण है, प्यार है, वो सब अच्छा लगता था, लेकिन ज्ञान जो है इतना बुद्धि में नहीं बैठा हुआ था। तो जब ये थे सैन फ्रांसिस्को में, तो बड़ी दादियों का वगैरह लेटर्स वहां पर जाते थे सेंटर्स पर, तो लेटर्स को चंद्र दीदी पढ़कर हिंदी में इंग्लिश में जैसे ट्रांसलेशन करके बताते थे, सब अच्छा लगता था। मैं यहाँ बिलोंग करती हूँ, लेकिन ज्ञान की गहराई में इतना जा नहीं पाए थे। But one thing made a lot of sense to me, and that was always say Haji. And so they would, Sister Chandru or Sister Denise would, actually Sister Chandru back then did not know all that much English. And so Sister Denise was doing a lot of the talk. And it was a very wonderful time in San Francisco because she was very creative and she had all these service ideas. And so sometimes she would ask me to conduct meditation, or she would ask me to give a talk or something. And I would say Haji,
not knowing what was going to come out of my mouth. तो सिस्टर चंद्र के साथ के इनके जो दिन थे शुरू के बहुत अच्छे थे, क्योंकि चंद्र दीदी बहुत क्रिएटिव है और इनको योग कराने के लिए जैसे सेशंस लेना है, टॉक देना है, तो भी इन्वॉल्व करती थी। तो इनको हाँ जी का पार्ट शुरू से जैसे बहुत अच्छा लगता था। And so many stories I could tell you about that, when Baba just at the very last minute, when I'm opening my mouth to say Om Shanti, then the idea comes of what I'm supposed to say after that. तो इनको जैसे अनुभव है, टॉक जब देते, लेक्चर्स वगैरह देते, भाषण करते समय ओम शांति बोलने के बाद जैसे बाबा टच करते थे क्या बोलना है। And there was this other sister who had been with me from the beginning. She would make excuses and she would say, oh, my stage isn't good enough. I don't think I can do this today. And so she would not take that opportunity. And she is not here today. तो दूसरी एक बहन थी, वो हमेशा जैसे हाजी का पार्ट नहीं बजाती थी, थोड़ा बहाना देती थी, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। हाजी का पार्ट नहीं बजाया ना, इसलिए अभी शायद वो नहीं है ज्ञान में। Now, back then, when we would go to Madhaban, one of the most powerful experiences was drishti from the dadis, the seniors, the Maharatis. And when Didi Manmohini would give drishti, it was like everything disappeared in white. You couldn't hear anything, you couldn't see anything except white light in her eyes. And जब भी मधुबन जाते थे, देखिए दादियों की दृष्टि से कितनी सेवा हुई है। तो दादियों की दृष्टि ने इनको बहुत अट्रैक्ट किया, खास करके मनमोहिनी दीदी का भी बहुत सुनते हैं। दीदी की दृष्टि माना पूरा लाइट और कुछ दिखाई ही नहीं देता था, इससे इनको दादियों की दृष्टि से बहुत अच्छा अनुभव होता था। And Dada Vishwaratan was another example of this. One time there was some program in the meditation hall, and afterwards, just on that little narrow veranda around the hall, I met Dada Vishwaratan. And I think I asked him some question, and he just started giving me drishti, and everything disappeared except his eyes. Sister, now those people will be coming to Madhuban, from whom they will take drishti in future. Yeah, we have to get there. We have to become like that. Daddies are not here, no? They can't meet daddies anymore now. Yeah, and the third thing about the third example of drishti is that one day somebody asked me to take a message to Dadiji, Buddy Daddy. And so I think it was a written message. And I went to her room, and I arrived there exactly, sat down in front of Dadiji exactly when the 10:30 traffic control went off. And so for the entire traffic control, Dadiji is giving me drishti. तो इनको जैसे दृष्टि का बहुत अनुभव हुआ है। एक बार मेडिटेशन हॉल के पास दादा विश्वरतन से मिले, इन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा वैसे उनको, लेकिन उन्होंने इनको ऐसी दृष्टि दिया, सब डिसअपियर हो गया, पूरा बॉडी जैसे दिखाई नहीं, केवल दादा की जो दृष्टि है अनुभव हुआ। बड़ी दादी के पास एक बार कोई मैसेज लेकर के गए थे, तो वहां पर भी जैसे ही गए, दादी के कमरे में 10:30 का ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम था, तो जैसे दादी की भी पावरफुल दृष्टि इनको मिली। And that was a different experience. It wasn't like everything dissolving in white, but it was this amazing feeling. And I'm not a visualizer. I don't get visions. I can hardly picture it, even when I try to picture things in my mind. But I felt like I was in the golden age. जैसे बड़ी दादी के सामने बैठे नीचे, 10:30 का ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम था, इनको ऐसा लगा मैं सत्युग में पहुंच गई हूँ। बहुत अच्छा अनुभव हुआ। So I think we all need to work on our power of yoga so that we can give others this kind of experience. And now, especially, I know we're running out of time, and I'm sorry I have to leave just a couple minutes before 8 this morning because I have to start reading Murli here. It's morning here. But I'll just share a couple more stories with you. But I think
we really need to move into the awareness of the future now. And I don't know if you're aware of it, but there's a whole program going on amongst double foreigners called Exquisite Exchanges. Are you familiar with this? Yeah, I have heard about it. Yeah. 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 So it's various senior double foreigner BKs sharing their churnings about the golden age. There's a booklet, there's reflections, there's all these 10 exquisite secrets about the golden age, and trying to get us to think about what will it be like to eat there? What will it be like to sleep there? What will it be like to bathe there? What will our relationships be like there? What will our environments be like? You know, how will we interact with each other, with the animals? And to really get us to start envisioning it and churning it and experiencing it now. तो अभी समय के हिसाब से योग की शक्ति को बढ़ाना है। आजकल जैसे सभी डबल विदेशी जो है सीनियर्स जो है सब मिल करके एक गोल्डन एज के बारे में ज्यादा चिंतन मंथन उनका चल रहा है। वहाँ हम कैसे सोएंगे, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, कैसे नहाएंगे, कैसे हमारे संबंध होंगे, कैसे वहाँ वातावरण होगा, ये सारी बातों का चर्निंग करके एक जैसे एक्सप्लिसिट सीक्रेट्स जो है सत्युग के, उसके बारे में ज्यादा अभी वर्क चल रहा है। And I don't know if you know about Sister Mohini's classes every evening in New York. It's afternoon here where I am. I think it's Amrit Vela where you are. But every day for the past 6 months, every single day without any break, Sister Mohini has been giving a Zoom class to over 1,000 souls on Zoom, live stream, and YouTube. And it's gone through different sequences, but right now is pilgrimage of तो जैसे मोहिनी दीदी जो है न्यूयॉर्क के, उन्होंने पिछले 6 महीने से एवरी सिंगल डे, एक दिन भी मिस नहीं हुआ है, एवरी सिंगल डे दीदी ने शाम को जैसे हर रोज क्लास कराया है अलग अलग टॉपिक पर। आजकल याद की यात्रा पर उनका ज्यादा अटेंशन है। And recently too, she's also starting to focus on this, that the pilgrimage of remembrance and the purity that we need has to be infused with these divine virtues, which is really what sets us apart from other paths that even where there's monks and nuns practicing purity, none of them is acquiring divine virtues. And it is this transition now that we're in of really trying to develop our deity stage that should be the focus. तो मोहिनी दीदी का आजकल यही फोकस है याद की यात्रा पर, जैसे क्योंकि पवित्रता की गहराई की बात, दिव्य गुणों की धारणा की बात, पवित्रता तो फॉलो करते हैं कोई नन्स भी वगैरह, लेकिन दिव्य गुणों की धारणा की बात वहां पर नहीं होती है, तो उस पर उनका जैसे ज्यादा आजकल फोकस है। So I just want to share a couple of other little quick stories. Is that okay? And then sign off, or would you rather ask questions or something? किसी के कोई क्वेश्चन है या उनके पास एक दो छोटे स्टोरी है बताएंगे, ऐसे पूछते हैं? अरे बताने दो, स्टोरी ही बतावे। Sister, you can share your story. Okay. So sometimes we wonder if Baba really hears us, right? Yeah. One time we met Baba in the history hall. And you know how there's those gutties in the front? Well, Baba was sitting on the sister's side, and sitting on the floor on the sister's side towards the front of the hall. And we double foreigners were all, you know, there were also Bharatwasis and Madhavanivasis, but we were kind of clustered around the front of the hall. And we were having personal meetings with Baba after the Murli. I don't remember which Murli it was. And, you know, the line kept moving closer and closer, and we would get in line for our turn. And so it was bothering me that the way the mic was right in between the person sitting there and Baba. So it was like right in your face.
And so I somehow whispered, can't you do something about moving that mic? And Sister Genty heard me, and she just turned around and she glared at me like, what are you just doing, making a problem here? So, okay, I shut up, and, I'm getting closer and I'm getting closer. And finally, it's my turn to have a meeting with Baba. And as I take my seat, Baba picks up that mic and moves it. And Sister Genty, I just caught she हॉल में बैठकर बाबा से मिल रहे थे। तो क्या हुआ, यहाँ बाबा है और बाबा के सामने माइक है और माइक के पीछे सिस्टर बैठी है। तो बाबा दिखाई नहीं दे रहा था सिस्टर को, क्योंकि माइक बीच में है ना। तो सिस्टर ने किसी को कहा, ये क्यों माइक को ऐसे रखा हुआ है, बाबा को देख ही नहीं पा रही हूँ, ये माइक हट नहीं सकता है क्या? तो सिस्टर जयंती ने इनको सुना और ऐसे देखा, क्या बोल रहे हैं, क्यों यहाँ प्रॉब्लम कर रहे हैं, माइक ऐसे नहीं हट सकता है। ऐसे उन्होंने इनको देखा, तो फिर ये भी चुप हो गए। इन्होंने कहा जाने दो, कोई बात नहीं। तो जैसे ही बाबा के पास गए बाबा ने वो माइक उठा के बाजू में रखा और इनको अच्छे से दृष्टि दिया, इनसे बात किया। तो फिर इनको लगा देखो बाबा हमारा सुनता है। वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। Yeah, that was a wonderful experience. And then another time, and I'm just sharing these things because these are the things that really kind of cemented me in my relationship with Baba. Even though Daddy had surrounded me with Baba, you have to develop your own relationship with Baba. And so one time, I was going through some things. I guess we all go through things. People were on my case about stuff. And so I was having a personal meeting with Baba, and Baba gave me long drishti. And then Baba said in very strong terms, let anyone say anything, but you just don't care, because Father knows who you are, and so do you. I was like, okay. I spent the rest of my Brahmin life trying to understand, when Baba knows who you are and so do you, what is that? तो इनका दूसरा अनुभव बाबा के साथ ये रहा, क्योंकि चाहे कुछ भी है, हर एक को अपना एक संबंध बाबा के साथ बनाना ही पड़ता है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा इन्होंने जो सुनाया। तो जब बाबा के पास गए, बाबा ने इनको दृष्टि दी और वेरी स्ट्रांगली कहा, चाहे कोई कुछ भी कहे, आपको चिंता नहीं करनी है, बाबा आपको जानता है, आप बाबा को जानते हो, दैट्स ऑल। ऐसे इनको बाबा ने ब्लेसिंग दिया। और So the story is really a story about faith in Baba. His Baba's moving the mic gave me a lot of faith in my relationship with Baba. And this second thing, that when Baba's telling me this, gave me a lot more faith in myself, right? And then there was one more example I was going to tell you, but I don't remember what it was, and my time is up. So I have to shut. तो हर एक बात जैसे बाबा के ऊपर हमारा जो निश्चय है उसके ऊपर डिपेंड होता है, उसी के आधार पर हमारे संबंध भी मजबूत होते जाते हैं बाबा के साथ। और मेरा टाइम समाप्त हुआ है, मुझे जाना है। Okay. Thank you, sister, for sharing. Thank you for your time. I know you are busy. Even then, you spare time for us. So thank you for that. And Kiran means rays. So you are radiating rays of happiness around the world. Okay. ओके भले भाई और बहनों, इनको अभी मुरली का टाइम हो गया है, इसलिए जल्दी है। तो बस अभी हम एकदम से पूरा करेंगे, 2 मिनट भी इनके लिए लेट हो जाएगा। तो चलिए आज ऐसे ही हम पूरा कर देते हैं। चलिए विदाई दे देते हैं हमारे मीठी मीठी किरण बहन को। ओके सिस्टर, ओम शांति। सविता बहन आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मुझे पहले ही बोला था सविता बहन कि मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि मुरली है, इसलिए। थैंक यू मधुबन से बहुत याद प्यार सभी को। थैंक यू। ओके चलिए, ओम शांति।